Hello everyone, welcome back to American Academy for Financial Management. This is Kareem Lakhani and I am back to answer one more question. Now let's see what's today's question. What are the main considerations when assessing the risk and return profile of a country for investment? So basically when you are investing in any country, okay, in any economy, in any market, there are a lot many things that you need to consider. So this is quite a very relevant question for many of the investors. So let's look at what are the considerations. So I have jotted out few, not exhaustive, but few very important things to consider before you do any investments in any economy. So the first one is currency value appreciation. So when you look at any economy, any country's currency, which keeps on appreciating against other economies or against other currency, is something which is to look for. Because when the currency appreciates, automatically the value of your investments are going to increase. So this is an add-on to your overall investment expectations, the return expectations. So when you look at economies like, the European economies, you look at America, all these economies, the currencies are appreciating. So on an average, when they appreciate by 4 to 5%, your investment values are also going to increase. So that is the reason it is also suggested that one should also have an exposure into international markets other than India. Now, when we say this point, it also means that Indian currency is depreciating against the dollar and euro and even pound. So it doesn't mean that Indian markets are not good because no matter Indian currency may depreciate against these currencies over a period of time, but there are other currencies against which the Indian currency is also appreciating. So when you look at Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, so there are so many third world countries against which Indian currency has been appreciating consistently. So that is the reason, and Indian markets also are as attractive as other international markets. And one of the reasons why Indian currency is depreciating is because we want to make our exports more dearer to the international market. So that is also one of the reasons. So one is the currency value appreciation. Second is the net export. So net export is nothing but your exports minus import. So when your exports are more than your import, that economy is going to fare well. Okay, that particular economy is going to have surplus because when your exports are more than your imports, then definitely that economy is going to do good. The third is GDP and real GDP. So the gross domestic product, which is nothing but the income of an economy. If the income of an economy is growing, if it is positive, then it is good to invest in that particular economy. And more importantly, the real GDP. Real GDP is the GDP or the growth in the GDP after adjusting the impact of inflation. So GDP ऐसे ही नहीं grow करेगा कि only you are seeing के GDP grow कर रहा है, but वो क्यों grow कर रहा है? Because the price increase हो रहा है. इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन होगा और प्राइस इंक्रीज होगा तो हमको लगेगा कि जीडीपी बढ़ रहा है, बट जीडीपी वो रियल टर्म्स में ग्रो नहीं करेगा. तो अगर खाली प्राइस बढ़ रहा है तो जीडीपी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, अनलेस वो जीडीपी में एक प्रोडक्शन फैक्टर भी इंक्लूड होना चाहिए कि अगर मैं
एक साल पहले 10 यूनिट बना रहा था और इस साल मैं 11 यूनिट बना रहा हूं, तो जब तब जाके पता चलेगा कि मेरा रियल जीडीपी बढ़ रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट तो हमको देखना ही है, एट द सेम टाइम हमको रियल जीडीपी भी देखना है, जो जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ द अप ट्रेंड इन द प्राइस। पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट। सो पर कैपिटा इनकम होता है कि एवरी इंडिविजुअल कंट्री के अंदर उनका इनकम कितना है और क्या रेट से इनकम बढ़ रहा है। सो जैसे हम जीडीपी इकोनॉमी का जब हम इनकम ग्रोथ रेट देखते हैं, वैसे ही हमको इंडिविजुअल्स का भी ग्रोथ रेट देखना है कि क्या इंडिविजुअल्स का इनकम भी वही रेट से बढ़ रहा है, तब जाके ने वो इकोनॉमी सस्टेनेबल होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एनी कंट्री जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, जैसे कि पाकिस्तान, सो वहां पे देयर इज सो मच ऑफ इंस्टेबिलिटी, जो गवर्नमेंट है who's running or the party who's running the government is not the party which is being wanted by the mass public। तो जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, वहां पर बहुत सारे प्रोसेशंस होंगे, अनरेस्ट होगा, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वेर एवर देर इज अ स्टेबिलिटी, इंडिया में देयर इज लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिकॉज सिंस द बीजेपी गवर्नमेंट हैज कम देयर इज लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज ऐसा नहीं हो रहा है कि एवरी 5 years और एवरी 3 years 4 years द गवर्नमेंट इज चेंजिंग। तो जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा, वहां पे पॉलिसीज काम करेगा, गवर्नमेंट का पॉलिसीज, गवर्नमेंट विल बी एबल टू टेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड दे विल बी एबल टू वर्क ऑन दोज पॉलिसीज। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू इन्वेस्ट। नेचुरल रिसोर्सेज एंड मोनोपोली। एनी इकोनॉमी, एनी कंट्री जहां पे अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अगर होता है, बिकॉज ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होगा वो उनके इनकम का सोर्स होगा। सो नो मैटर उनके दूसरे इनकम आए या ना आए, बट उनके नेचुरल रिसोर्सेज में से उनको कंसिस्टेंट इनकम मिलेगा। एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर समथिंग जो इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देता है, प्लस जनरली द नेचुरल रिसोर्सेज आर समथिंग विच इज इंक्रीजिंग इन द प्राइस। सो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमी का इनकम बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सो नेचुरल रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन टू लुक एट एन इकोनॉमी। एंड मोनोपोली, ऐसे कोई इकोनॉमी है जहां पे उनकी मोनोपोली हो, जैसे यूएस, जहां पे उनका मोनोपोली है कि इंटरनेशनल ट्रेड्स हैपेंस इन डॉलर्स, तो उनका करेंसी, उनका इकोनॉमी इसीलिए ज्यादा अच्छा है बिकॉज उनकी करेंसी की वैल्यू है और उनकी करेंसी इज बीन एक्सेप्टेड ग्लोबली। सो उनकी एक मोनोपोली है बिकॉज ऑफ द करेंसी। लाइकवाइज देयर आर डिफरेंट इकोनॉमीज लाइक कंट्रीज लाइक मिडल ईस्ट वेयर दे हैव द मोनोपोली फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल। You have Africa who has a monopoly for diamonds. You have China who has monopoly in electronics and technology. Now China is also trying to get its monopoly in your lithium. They are trying to acquire more and more lithium. कल को अगर हमको lithium का जरूरत है, तो we will have to look at China because they will have major control over the lithium extracts. Young population. So you have to also look at कि एक कंट्री के अंदर यंग पॉपुलेशन कितना है। अगर कोई इकोनॉमी है जहाँ पे यंग पॉपुलेशन कम हो रहा है, ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बर्थ रेट्स कम है, डेथ रेट ज्यादा है, that is an economy which is not sustainable. It is not going to grow. सो जो कंट्री में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है वो इकोनॉमी फास्ट ग्रो करेगा। एंड बिकॉज हमने अभी यंग पॉपुलेशन की बात किया, वी ऑल्सो हैव वन मोर पॉइंट, यंग पॉपुलेशन प्रेफरेंस ऑफ रेसिडेंस। सो अगर यंग पॉपुलेशन है वो कहाँ पर प्रेफर कर रहा है रहने के लिए,
अगर यंग पॉपुलेशन अपने ही होम कंट्री में प्रेफर करता है रहने के लिए तो वो इकोनॉमी ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा. बट अगर यंग पॉपुलेशन अपने होम कंट्री से बाहर जाना चाह रहा है और वो अपने होम कंट्री में नहीं रहना चाह रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन. नाउ यू माइट थिंक दैट इंडिया में तो ऐसा हो रहा है कि यंग पॉपुलेशन इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री. बहुत सारे लोग यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दे आर गोइंग इन अदर कंट्रीज एंड सेटलिंग. That is true. But India has the strength of so much population कि थोड़ा पॉपुलेशन इंडिया से बाहर जाएगा तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा. सो इंडिया के अंदर लोग बाहर जाने के बाद भी इंडिया का यंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. दैट इज द रीजन द वर्ल्ड इज बेटिंग ऑन इंडिया. देन यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. द कंट्री, द इकोनॉमी जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, उनका एयरवेज, द रेलवेज, द कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स, हाईवेज, द बैंकिंग सिस्टम, ओके, इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी, लॉट मेनी थिंग्स. तो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा या स्ट्रांग हो रहा है, यू हैव टू लुक एट दोज इकोनॉमीज. एंड द लास्ट वन इज द एजुकेशन लेवल एंड एजुकेशन सिस्टम. हमको ये देखना है कि उस इकोनॉमी कंट्री के अंदर पेनिट्रेशन ऑफ एजुकेशन कितना है. व्हाट इज द एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन पर पर्सन. जहां पे एजुकेशन लेवल्स बढ़ेगा, दैट इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो फास्टर. एट द सेम टाइम वी हैव टू सी दैट उस कंट्री में एजुकेशन सिस्टम इंटरनेशनल लेवल का है या इट इज नॉट एट पार विद इंटरनेशनल लेवल. अगर वो इंटरनेशनल लेवल का है या हो रहा है तो यू कैन से दैट फ्यूचर में दूसरे कंट्री से लोग हमारे कंट्री में पढ़ने को आएंगे, सो इकोनॉमी और इम्प्रूव होगा. बट अगर हमारे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट इन टू वेज. अगर एजुकेशन लेवल्स एंड सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमारे कंट्री का जो यूथ है, दे विल नॉट बी गेटिंग द right level of education, and at the same time the foreign students are not going to come and pursue their education in our country because that is also going to grow our economy. So jo country mein, the way that India is growing today, India ke andar different levels of education system hai, starting with CBSE, ICSE, IB, Cambridge, बहुत सारे अलग अलग education systems है. So India is adopting the इंटरनेशनल एजुकेशन वेरी फास्ट. इंडियंस को वो इंटरनेशनल एजुकेशन एंड बेटर एजुकेशन सिस्टम की फैसिलिटी मिल रही है. एट द सेम टाइम अदर कंट्रीज आर लुकिंग एट इंडिया टू कम एंड परस्यू देयर फर्दर एजुकेशन बिकॉज उनके कंट्रीज में वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है. सो दीज आर सर्टेन कंसिडरेशंस दैट यू शुड कंसिडर बिफोर यू डू एनी इन्वेस्टमेंट इन एनी इकोनॉमी और इन एनी कंट्री. थैंक यू.